Greetings, MotorWorld India fans. Welcome back. We are the Akodi plant in Bajaj, and this is the Akodi Bajaj plant. And you can see that we are here for a very special occasion. ये है आज Bajaj Pulsar SS N160 के लॉन्च के लिए. आइए देखते हैं क्या बाइक है. And we are now looking at what the new Pulsar N160 SS looks like. बाहर से ये कैसा दिखता है. This is the new Bajaj offering, which is for all the classic Pulsar fans. Now, शुरू करते हैं ये हेडलाइट से. अब देखिए ये हेडलाइट का शेप. It is pretty triangular from the front with all LED setup and a projector, LED indicators. ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसके साथ फ्लश बैठता है एंड इसका जो शेप आप देखेंगे that is completely coming in bulge with the headlight cowl, which again slightly different for the 160. आपने ये perhaps shape देखा है from the old 160s and the 180s and the 200s etc. But this is a slightly different angle that you can see. Now, moving on, जैसे मैं पहले आपको कह रहा था कि this is the N160 SS ABS unit, which is a dual channel top end version. ये ABS यूनिट में कैसा है कि ये फ्रंट बम्पर जो है या फ्रंट फेंडर जो है इसमें दो पीसेस आते हैं. एक जो ये मैट से ऊपर ग्लॉस में लगा हुआ है एंड नीचे विद ऑल द स्टिकरिंग एटसेट्रा, विच एक वेल नाउ थोड़ा सा डर्टी है सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट, बट अगर ये आप थोड़ा क्लीन दिखते हैं, साफ दिखते हैं, तो इट एड्स अ फिनेस फिनिशिंग टच दैट मेक्स द बाइक फ्रंट एंड लुक वेरी गुड ओवरऑल. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम द लुक्स पॉइंट इटसेल्फ, देखिए आप एलॉय व्हील्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर दिया है विच इज रेड, विच इज मैट रेड फिनिश. यहाँ पे स्टिकरिंग दिया है फ्रॉम बोथ रिम एंड्स, which is more premium, or rather which gives a high-end bike look and feature to the rim set overall with decals. Now, when you come to the tank, ये आप टैंक के पैनल सेट पे देखेंगे तो you can see that the metal itself बहुत कम है and the plastic end at both ends, which is the cowling towards the front fork set, is very long, quite complex. देखेंगे तो आप यहाँ पे air के fins दिए हुए हैं at both ends. And they have multiple panels, which is quite interesting to look at because ये बहुत complex design है from both left and right ends. And guys, now we look at the mid and rear section of the Pulsar 160. इसका जो features है हम थोड़ा और highlight में बात करेंगे आपसे. अब ये देखिए जो seat की shape है which is quite angular, that is mixing in front with the mid panel and the very very curvy and stout rear panel. अब आप देखेंगे इसमें तो ये जो finishing के छोटे छोटे डॉट स्लैश होल्स दिए हैं, this is a mock race finish type which fits in very well with the overall panel itself, which is a one single piece unit by the way, and this mids in or blends in with the rear panel, that is the rear cowling quarter panel. जो आप यहाँ पे देखते हैं ये देखिए जो very interestingly matte red painted grab rail तक आता है. This finishes here, ends at the grab rail and your tail cowl begins. ऐसा है. But if you see the panel line, the panel line side is very much at par with the Bajaj premium end offering bikes like ATM for example, and the premium Japanese offerings which are currently in competition with the Bajaj. Quite good in fit and finish. Moving on, we come to the tail section. यहाँ पे जो आपकी tail end है, which is your tail type, your tail fender, you'll see that there's a single metal piece, right? And that goes on to hold your license plate and light with LED lamps. We also look a little in detail towards the rear end. जो पीछे के सेक्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्विन हगर सेटअप है जो दूसरी बाइक में भी देखे होंगे. एक हगर है यहाँ पे, दूसरा प्लास्टिक इज हियर along with the chain guard. Now sari guard blending in, bent quite well with the overall fascia. Moving on, यहाँ पे देखिए आपका राइडर से ट्रायंगल है and very interestingly and angularly built crankcase design यहाँ पे लेफ्ट साइड पे. राइट साइड पे थोड़ी राउंड है but still here, and your under chassis belly guard. And now that we have seen how the exteriors or the looks of the Pulsar is for the new launch from Bajaj, moving on to the technical section with the front end to start with. अब आप सामने देखेंगे ये 17 इंच की रिम है, ये 100/90 की टायर है, रनिंग ऑन ट्यूबलेस, फ्रंट रोटर, ABS ट्विन चैनल, ये 300 mm की रोटर है which is running a Gearbox twin piston caliper unit. Overall feel of the brake that you can see, जब आप चलाएंगे
तो bite is very progressive. You may not get the initial bite like a Brembo अगर आपकी आदत होगी तो, but for an ABS unit, the brake feel is quite potent, is all I can say. अगर आप stoppies या endo strike करेंगे, I can't do commenting on that, but this is very good for a daily ride. Now, one other thing to note is कि ये जो ग्रेमेका की मास्टर सिलेंडर यूनिट है उसके साथ भी इन्होंने एडजस्टेबल लीवर्स दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस क्लास. ये 5 स्टेप एडजस्टर है विच इज़ अ रोटरी डायल, जो आप देखेंगे कि यहाँ पे व्हेन यू कैन रिलीज द लीवर, यू कैन रोटेट द डायल एंड यू कैन लीव इट फॉर द रीच. जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे नंबर 5 पे आएगा एंड ये और पास आएगी, दैट. So आपकी जो comfort level है, you can adjust your brake lever to that. Now the rear brake, like I said, is a twin channel or a dual ABS sensor setup, which is running a single piston caliper and a 230 mm rotor for the again rear 17-inch wheel, which is running a 130 by 70. We are going to the critical part of the machine, which is to begin with the suspension. The front suspension, जैसे आप ये देख सकते हैं, is an upside down fork unit, which is rated at 37 mm of OD/outer diameter. And now we move on to the rear suspension set, which is the other critical part, which gives you a comfortable and pliant ride. आपकी सीटी की पॉट होल्स वगैरह बहुत अच्छे से लेती है, गाड़ी को स्टेबल रखती है. This is a centrally mounted rear shock twin tube unit, which is non-gas charged, मतलब hydraulic है, coil spring है, damper है, and that's it. But it is centrally offset on the swing arm. Now we look at the exhaust of the Pulsar N160 SS, जो कि अंडर chassis डिजाइन दिया हुआ है, which you can see the baffle plate and the exhaust unit below, जो chassis के नीचे दिया है beneath the swing arm. जब आप देखेंगे तो इसकी कैटेलिटिक कन्वर्टर जो है, if you move on from the rear to the slide front end side, head की तरफ जो इंजन की तरफ जाती है, the catalytic converter is given below/behind the front crash guard. And now we move on to the very important part, जो Pulsar 160 की nerve center है, the instrument console. आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है. There is a now very nicely finished TFT LCD screen, जो matte में है and looks very attractive during the day, even in sunlight. This is how it starts up, and this is basically to tell you all that is going on with the bike. जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर स्टैंडस्टिल पे है, these controls are intuitively controlled by ये डैशबोर्ड के स्लैश हैंडल बार के लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विचेस. फॉर एग्जांपल, आप इसको दबाते रहेंगे, इट गोज टू द मेन्यू मोड, जहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल इंफॉर्मेशन, ट्रिप मीटर, आपका लैप टाइमर एटसेट्रा, एंड दैट्स व्हेन यू वांट टू रेस ऑफ कोर्स. ये देखिए, आप रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू टेक द बाइक टू ट्रैक्स लाइक MMST, करी, मोटर स्पीडवे कोयम्बतूर एटसेट्रा. Then you have your connectivity, which is Bluetooth and NFC paired. Wi-Fi भी है इसमें. You can see you can pair it with your phone. There is a Bajaj app that you can use that you'll pair with your instrument console, and उस पे आप सारे features for your trip and everything else can be stored and utilized. Right? Another thing is आपका Google Maps जो है वो जैसे ही आपका ऐप इसमें डालते हैं इसके साथ पेयर कर सकते हैं, and you can use it while riding. आप अगर यहाँ पे एक बार ध्यान से देखेंगे, दिस इज द ट्रैक्शन कंट्रोल. इंटरेस्टिंगली फॉर अ 160cc बाइक, यहाँ पे बजाज ने हैज फाउंड इट इंपॉर्टेंट टू गिव यू ट्रैक्शन कंट्रोल दैट कैन बी मैन्युअली स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, along with of course your dual channel ABS. Right now, please note that this is a 5-speed engine या 5 गियर वाली इंजन है. So you have your gear indicator on the left, which you can see your speedometer. Again, if you wish to, you can set this कि आपकी acceleration जो है हर बार जब भी आप 0 to 60 या 0 to 100 करेंगे, you can measure your timings at every run. Quite nifty. And of course your fuel gauge, which is pretty easy to use, and your ride modes. 5 ride modes: sport, road, rain, off-road and tour. Now considering कि ये एक ride by wire / electronic throttle cable गाड़ी है, all of these modes affect your ignition timing and your fuel injection timing to give you a better map for the kind of traction that your ABS channel picks up and gives the bike. Now, you also have other system settings, which like you can see here, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, traction control can be manually switched off, which is again gadgetry, but see, quite nifty and very useful for those who want to stunt. Now,
कीपिंग अप विद द मॉडर्न टाइम्स, बजाज ने ये सोचा है कि डे लाइट रनिंग लैम्प्स या डीआरएल के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन देना चाहिए फॉर अ फीचर. हाउ इट वर्क्स इन द न्यू पल्सर 160 इज, अगर आप इग्निशन ऑन करेंगे, सी योर हेडलाइट डज नॉट टर्न ऑन बट योर पार्किंग लैम्प डज. यहाँ पे आपके राइट साइड पे जहाँ पे हेडलाइट स्विच होनी चाहिए वहाँ पे पार्क एंड हेडलाइट का ऑप्शन है. जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, यू सी दिस इज ओनली व्हेन ये हेडलाइट शुरू होना चाहिए इफ यू स्विच ऑन द स्विच. ये राइट साइड के कंट्रोल पे यू हैव द ऑप्शन कि अगर आपको स्टार्ट करना है हेडलाइट तो ही चलेगी, अदरवाइज यू हैव अ सेपरेट लाइट सेट फॉर डीआरएल. नाउ इफ you can switch on and off with this, your primary headlight other control is from your left side. जो एक सिंगल टॉगल स्विच है. ये है आपकी हाई बीम, ये है आपकी लो बीम एंड ये है आपकी फ्लैशर. Another point to note for the new BS6 compliant Pulsar is कि ये गाड़ी, यहाँ पे आप स्टिकर देख सकते हैं फ्यूल टैंक पे, एथेनॉल 20 compliant है. Another good feature for all those new bikers. The other point is now coming to the very critical bit of this new bike, the engine itself. Now, this is a 165cc single cylinder, very over square engine, which puts out 18.2 bhp at about 9500 rpm and about 14.5 nm odd of torque at 7500 rpm. In the competition with all of the other bikes in its category, like the obviously Apache RTR, and some people may also want to compare it to the Yamaha 155. This is pretty much bang on in the category. Not at all bad for an Indian make. The engine is quite nifty. जहाँ तक Bajaj company claim कर रही है, it is giving about under normal riding conditions 43 to 44 kpl. 43-44 की एवरेज इज नॉट एट ऑल बैड कंसिडरिंग दिस कंडीशन एंड फॉर एथेनॉल 20 फ्यूल. नॉर्मली आप देखेंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस एज क्लेम्ड इज 0 to 60 in about 4.7 seconds as a company spec. Again, that is at a factory rider, probably at a curb weight of maybe 45, 50 or 55 kgs max at a under रेस रेस ट्रैक राइडिंग कंडीशंस. अगर हमारे जैसे लोग, नॉर्मल लोग जो है इसको गाड़ी को चलाएंगे, देन आई एम एट अ कर्ब वेट और रदर with jacket and everything weight of about 100 kgs odd, and the best timing that I could gather was a 0 to 60 at about 5.4 as opposed to 4.7, which is not bad, but that would mean that your power to weight ratio plays a very big factor role. So अगर आप गाड़ी भगाएंगे, कंपनी की टॉप स्पीड क्लेम जो है 114 ऑन जीपीएस, अगर शायद आप उस पर टच ना कर पाए तो fear not. For most people, middle aged, normal aged, however want, even if you say young people who may be slightly heavy and hefty, अगर आपकी weight 70 से ज़्यादा है, realistically you can expect a top speed of about maybe 106 or 107, which I saw on the speedometer. अब टाइम आ गया है to put the rubber to the road and see what the bike is all about. आइए अब देखते हैं द न्यू पल्सर N160 SS 4 valve टॉप एंड एडिशन विद ड्यूअल चैनल ABS कैसा लगता है चलाने में. नाउ सबसे पहले की पॉइंट टू नोट इज कि जो बजाज की 4 valve है इज़ वेरी डिफरेंट इन इंजन डिज़ाइन फ्रॉम द बजाज 2 valve, क्योंकि बजाज की 2 valve N60 और N160 इज़ एट 58 mm ऑफ बोर बाई 62 mm ऑफ स्ट्रोक विच इज़ अंडर स्क्वायर, लेकिन जो 4 valve है दैट इज़ ओवर स्क्वायर एट 63.5 mm ऑफ बोर एंड 52 mm ऑफ स्ट्रोक. क्वाइट इंटरेस्टिंग. दोनों की व्हील बेस वगैरह सेम है एट 1348 mm. गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अगेन इज एट 165 mm विच इज़ ऑल्सो द सेम. गाड़ी इज़ वेरी गुड टू टर्न इन, शार्प हैंडलिंग है. गाड़ी की सस्पेंशन इज़ वेरी गुड विद 37 mm वेरी पार एट क्लास USD फोक्स. रियर मोनोशॉक ट्विन ट्यूब बहुत अच्छा है. इंजन की पावर डिलीवरी विच इज़ क्लेम टू हिट अप टू 10,900 RPM ऑफ रेड लाइन is pretty decent to use up till 9,500 RPM odd, which feels pretty decent because उसकी जो top power है which is at 18.25 bhp is delivered at that RPM. जो 14.4 Nm of torque है that comes at 8,000 RPM odd, and that feels quite peppy to use right up till 7,000 RPM where you feel the vehicle sponge. गाड़ी is quite easy to turn in, flickable है. गाड़ी का हैंडलिंग फील्स न्यूट्रल एंड द राइड क्वालिटी इफ नॉट एट पार विद यूनिकॉर्न इज क्वाइट डिसेंट इन द क्लास. ओवरऑल इज स्टिल गुड टू गो, बट आई कैनॉट कमेंट फर्दर अप टिल आवर लॉन्गर फर्दर रिव्यूज. लेकिन द बजाज पल्सर 160 इज ब्रेकिंग द सेगमेंट रूल्स एज वी सी इट, एंड यस कूडोज टू यू बजाज. एंड थोड़ा गाड़ी चलाने के बाद, लेडीज एंड जेंटलमैन, मोटर वर्ल्ड इंडिया फैंस, प्लीज डू व्यू एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑफ कोर्स, बट ये गाड़ी की सिटी रिव्यू आफ्टर राइड इज दैट ऑल्दो पोटेंट, गाड़ी की प्राइस है अबाउट 1,43,000 एक्स शोरूम फॉर दिस टॉप एंड वर्जन.
which will come down or rather set you back by approximately about 1,65,000 odd, 1,70,000 odd for the fully loaded on road for Mumbai and Delhi guys. Um, I would say that this is quite decent. गाड़ी आप चलाएंगे, you'll get to know that every shift in this 5-speed gearbox, the clunk is positive. Maybe not as easy shifting or not as, how do I say, um, race shifting category as the R15s when you do a clutchless shift or an upshift. For example, अगर आप high revs पे shifting करेंगे, this more or less feels the same as clunky as the nearest competitors like Apache, for example, etc. But kudos to Bajaj for getting the math right. They have improved quite a bit. Handling is quite tight. The very good suspension works its way, and you can feel the tarmac. If you are a relaxed rider, अगर आपको आराम से चलाना है, no doubt there will be no complaints. Good comfort, good controls, everything is sorted. Plus, with the 43, 42 odd kmpl real world average claimed, it should pretty much be at par with what you expect. Oh yes, did I say कि आप अगर एक बार full tank करेंगे तो with about 16 liter odd tank you will be having quite a decent reach as well. So आपकी long rides पे भी उतनी problem नहीं आनी चाहिए. Overall, kudos to Bajaj, wonderful ride, keep it up. Cheers guys.